Hello friends, प्यारे बच्चों. Now today we will discuss the relative strength of acids. एक लाइन की अगर बात करें तो एसिड्स क्या होते हैं? The species which can donate hydrogen ion are called as acids. इसको अगर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में बात करें तो प्रोटॉन डोनर भी होते हैं और लोइस एसिड के कंसेप्ट में बेस कर बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं. यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन की रेस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं, तो हम उसी की रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात करेंगे. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर इट्स प्रोटॉन टू ए बेस टू फॉर्म its conjugate base. When a monoprotic acid dissolves in water, it transfers its proton to water to form hydronium ion and a conjugate base. And we can write this definition in the following way. The strength of an acid depends upon its ability to transfer its proton to a base to form its conjugate base. When a monoprotic acid, let Ha, is dissolved in the water, it donates its proton to the water to form hydronium ion and a conjugate base. Let Ha is an acid and this is water. Then यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा और यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा. कॉन्जुगेट बेस और Ha प्लस वाटर रिवर्सिबल हाइड्रोजन आयन प्लस A negative. This equation represent the dissociation of an acid Ha to hydrogen ion and A negative ion. So Ka will be equal to concentration of hydrogen ion and the concentration of A negative ion divided by concentration of Ha acid, where Ka is the dissociation constant of acid. जो हमारा Ka है वो इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा. ऑफ एसिड Ha भी इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका पर्टिकुलरली सभी एसिड का एसिड कांस्टेंट डिफरेंट होगा. Thus, the strength of an acid is defined as the concentration of hydrogen ions in its aqueous solution at a given temperature.
जब हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो ही इसकी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ शो करेगी। Thus the value of Ka for a particular acid is a measure of its acid strength और acidity। यहाँ पर K क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये K वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक तरीका है। Thus we can write the strength of an acid may be defined as the concentration of hydrogen ions in aqueous solution at a given temperature. So the value of Ka dissociation constant is the measure of strength of an acid or acidity of a particular acid। इस प्रकार से के यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करेगा। इन एनी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड the acid is dissociated completely and the value of K is very large, while a weak acid is dissociated partially, so the value of K will be small. Thus, in general, the value of an acid dissociation constant is large for strong acid and weak for weak acid. We can write it also, since the strong acid is dissociated completely, so the value of Ka will be high for strong acids, while the weak acids are dissociated very small, so the value of Ka for weak acid will be small. That is, the value of Ka is will be high for strong acids, while low value for weak acids। सीधा सीधा यहाँ पर रिलेशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं तो के वैल्यू भी उनकी लार्ज होगी, जबकि वीक एसिड बहुत कम डिसोसिएट होते हैं तो उनकी के वैल्यू भी स्मॉल होगी। नाउ यहाँ पर हमारे पास अगर एक से अधिक एसिड दिए गए हों तो किस प्रकार से हम उनकी यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट या स्ट्रेंथ को रिलेट करेंगे एक दूसरे की एसिडिटी से या स्ट्रेंथ से। So the calculation of relative strength of weak acids from
K. Calculation of relative strength of weak acids from K. हमारे पास K वैल्यू होगी तो किस प्रकार से रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी मेजर करेंगे. लेट अस कंसीडर an acid in aqueous solution. HA रिवर्सिबल हो जाए. यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन प्लस ए नेगेटिव आयन. लेट C moles per liter of the concentration of acid and alpha is the degree of dissociation. Then concentration of hydrogen ion will be equal to C alpha and concentration of A negative ion is equal to C alpha and concentration of acid will be equal to C1 minus alpha. Now K will be equal to C alpha into C alpha upon C into 1 minus alpha, or Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. If the degree of dissociation is very small in comparison to unity, then 1 minus alpha will be equal to 1. So Ka is equal to C alpha square. For two different acids 1 and 2, the degree of dissociation will be alpha 1 and alpha 2, and dissociation constant will be K1 and K2. अगर हम दो एसिड की बात करते हैं, दो एसिड को अगर लेते हैं, दो वीक एसिड लेते हैं, तो उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है, जबकि उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो K1 एंड K2 के बराबर है. देन हमारे पास जो इक्वेशन आई है यहाँ पर K1 यहाँ K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो ये हमारे पास हम दोनों एसिड के लिए अगर कंसीडर करते हैं, तो दोनों एसिड के लिए जब हम इनको कंसीडर करेंगे तो K1 इक्वल टू C अल्फा 1 स्क्वायर एंड K2 इक्वल टू C अल्फा 2 स्क्वायर. हमारे पास ये दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर हम और K1 अपॉन K2 इक्वल टू अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन अल्फा 2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट K1 अपॉन K2 के बराबर हो जाएगा. यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट में रिलेशन आ जाता है. Since hydrogen ion concentration is the measure
of acid strength. So it depends on the degree of dissociation alpha. We can write strength of acid 1 upon strength of acid 2 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ K1 अपॉन K2 के यहाँ पर बराबर होगी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ का और डिसोसिएशन कांस्टेंट का। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K1 अपॉन K2। द रेशियो K1 अपॉन K2 विल give the relative strength of two acids. The ratio of square root K1 upon K2 gives the relative strength of two acids, and similarly Kb is equal to C alpha square upon C 1 minus alpha. Kb is equal to concentration of hydroxide ion concentration of conjugate acid divided by the concentration of VOH। इस प्रकार से हम जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म एसिड के केस में लेते हैं और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड निकालते हैं, सिमिलरली यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म लेने के बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी सिमिलर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा K1 K2 का यहाँ रिलेशन आएगा वो बेस के केसेस में हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस प्रदान करेगा, वो हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस शो करेगा। और इस तरीके से हम एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।